Good evening to all the students. So we are back once again with the revisionary LVCs of financial management. And today we would be learning about, or in fact not learning, but revising about management of working capital. ठीक है? So previous दो सेशंस में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट किया, हमने लेवरेजेस कंप्लीट किया एंड हमने डिविडेंड डिसीजन भी कंप्लीट किया. ठीक है. सो टुडे इज मोर अबाउट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो लेट्स स्टार्ट. You would not be able to see my screen. Let me just share. Yeah. Is my screen visible, students? I feel it is visible now. ठीक है. Okay, thank you. Thank you for responding. So let's first quickly revise all the concepts that were covered in the chapter of management of working capital. So first, what do you understand by the term? See, the flow of our learning was very simple. हमने पहले सब चैप्टर के मतलब समझे कि जो भी चैप्टर का नाम है, the term of the chapter was first understood and explained. उसके बाद we learned कि हमें इस चैप्टर से क्या सीखने मिलेगा. How the concepts of this chapter will help us in our future financial life. Means, what are the learning objectives of this chapter? And third but not the least, we solved various practical problems. ठीक है. तो मुझे पहले ये बताओ, by now you are very much familiar with this term. What do you mean by working capital in simple terms? In a very simple and layman terms. Yeah, good evening. Can I say working capital is nothing but funds or money for running day-to-day business operations? ठीक है. सो रूटीन बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. एंड टू एक्सप्लेन यू in more detail or in more easy terms, I had given example of restaurant in my regular LVCs. So उससे पूरा कॉन्सेप्ट लेमैन को भी समझ जाए ऐसा समझाया था. ठीक है. सो आई विल नॉट टेक दैट एंटायर स्टोरी वंस अगेन बिकॉज now in revisionary LVCs we have time constraint and we have to cover many topics. ठीक है. But again, just to acclimate you, just to recollect you all, let's say we are starting a manufacturing business. And for manufacturing business, कहना है से मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड की जरूरत होगी. सो आई विल बाय अ लैंड. ठीक है. फिर इस फैक्ट्री लैंड में आई विल कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री बिल्डिंग. आई एम वेरी पुअर इन माय ड्राइंग, सो यू कैन विजुअलाइज अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो फैक्ट्री बिल्डिंग लगेगा. फिर उस बिल्डिंग में I will install different machineries for my production. Yes or no? This is chimney. ठीक है. So I will install machineries. फिर various electrical fittings. I will set up an office space as well in my factory. This is my office. So tell me, friends, just by buying the factory land or just constructing the office or just constructing the factory building or just installing various electrical appliances, will my manufacturing business start?
बस इतनी सारी चीज मैंने खरीद ली, इतनी सारी चीज में मैंने इन्वेस्ट कर लिया, विल माई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट? एब्सोल्युटली नॉट. Fixed assets, see, in a very simple term, this all are fixed assets. This all are nothing but cluster of fixed asset. तो fixed assets cannot work on its own. बस fixed assets में invest कर देने से बिजनेस, कोर बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा. कैन आई से टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये मशीन में डालने के लिए मुझे इन्वेंट्री लगेगी, उस इन्वेंट्री पे काम करने के लिए मुझे लेबर लगेंगे. Apart from labor, there would be certain other over manufacturing overheads I need to incur to for the smooth running of the business. So that additional capital that you need for smooth running of this fixed assets, additional funds that you need for smooth running of this cluster of fixed assets is called working capital. ठीक है? So a technical definition of working capital. This is very simple meaning of working capital. Funds that you need for day-to-day business operations. But more technically, working capital is defined as additional funds needed in the business for smooth running of fixed assets. ठीक है? So that is working capital. So on the first phase of the chapter, we understood the meaning of the term working capital. फिर हम हमारी लाइफ में आगे बढ़े थे, हमने देखा कि इस चैप्टर से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस चैप्टर. So learning objective number 1 was we first calculated this amount. हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, जो एडिशनल फंड्स दैट यू नीड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस. तो हाउ टू एस्टिमेट दिस अमाउंट, वो हमने सीखा. सो फर्स्ट पार्ट वाज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि हमें पता लग गया कि फिक्स्ड एसेट्स कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, उसके लिए हमें कुछ और एक्सेस फंड्स लगेगा. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट एक्सेस फंड इज नीडेड, वो हमने सीखा था. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज एस्टिमेशन. ठीक है? सेकेंड, वंस द अमाउंट इज एस्टिमेटेड, अब हमें पता चल गया कि मान लो हमें 10 लाख का वर्किंग कैपिटल चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन दैट अराइजेस कि अब हम ये 10 लाख कहाँ से फाइनेंस करेंगे, कहाँ से ये 10 लाख रेस करेंगे. आर यू गेटिंग दिस? सो सेकेंड लर्निंग आउटकम वाज फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, विच वाज मोर ऑफ अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट. उसमें ज्यादा थियरी थी. यस और नो? पहले एस्टिमेट करो कितना है वर्किंग कैपिटल. एक बार एस्टिमेशन पता चल गया तो अब उसको कौन से सोर्सेज से रेस करोगे, दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है? एंड देयर वाज सम सेपरेट concept called working capital operating cycle. So this was the learning objective of the first part of the chapter. See, management of working capital is an umbrella. It is a very big umbrella. उसके अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होता है? वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इज एस्टिमेटेड बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. Formula is nothing but current assets less current liabilities. So first part of the umbrella is estimation, which is nothing but current assets less current liabilities. So उसके बाद going one step forward, we understood the different components of current assets, different line items of current assets. Can I say जनरली सब बिजनेस में डेटर्स होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा, फिर इन्वेंट्री होगी, यस और नो, एंड अदर करंट असेट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह होगा. करंट लायबिलिटी में जनरली एवरी बिजनेस वुड हैव क्रेडिटर्स इन देयर बैलेंस शीट.
Then other current liabilities includes outstanding expenses, बैंक ओडी वगैरह. ठीक है. So the formula to estimate working capital is simply reducing current liabilities from current assets. तो अब ये चैप्टर ये बोलता है कि हाउ टू मैनेज योर रिसीवेबल्स. That is also a separate concept that you have to learn, because current assets includes many subparts. So we have to understand how to manage receivables. We have to learn how to manage cash optimally. We have to learn how to manage inventory optimally. Are you following? And we have to learn how to manage your creditors optimally. Optimally means in the best interest of the company. Means managing these components in such a way that your company gets maximum benefit. कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट हुआ तो इन टर्न शेयर होल्डर्स यानी कि इक्विटी ओनर्स को मैक्सिमम बेनिफिट होगा. सो हमें इस ये सारे कंपोनेंट्स को इस तरह मैनेज करना है कि जिससे कंपनी का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. ठीक है. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में देर आर सर्टन सब अम्ब्रेलास, जैसे कि देर इज अ चैप्टर ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट एज वेल. सो हमने वो भी सीखा था. फिर कैश मैनेजमेंट एज वेल, कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट वाज आल्सो अ सब चैप्टर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आता है, बट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नथिंग बट योर मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर दैट यू हैव इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पेपर. ठीक है. सो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी आर नॉट कवरिंग दिस चैप्टर बिकॉज ऑलरेडी वो कॉस्टिंग में कवर हो चुका है. बट अगेन, mark my words, inventory management is also equally important as far as management of working capital is concerned. ठीक है. And last but not the least, payables management. So in our regular LVCs, we understood and learned each of these sub chapters because they are equally important. मान लो, if you have correctly estimated your working capital needs, but on the other end you are not able to manage your receivables or payables efficiently, तो कहने से कंपनी को नुकसान हो रहा है. If you are not able to maintain cash properly, or if you are maintaining very high cash balance than required, so again you are not managing the cash efficiently. So ये सबसे कंपनी नुकसान में जाती है. हमें फील नहीं होता कंपनी नुकसान में जा रही है, बट एक्चुअली इट गोस. ठीक है. सो मैनेजिंग द सब कंपोनेंट्स और द लाइन आइटम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन लाइफ. Followed. So this was the entire background that we have learned in management of working capital. ठीक है. So now just quickly revise कि हमने ये सारे चैप्टर में क्या क्या सीखा था. So let's start with estimation. Can I say estimation of working capital is nothing but current assets less current liabilities? So how did we estimate that? Can I say हम एक format बना देते. We are a students of very professional course. तो हमारा वे ऑफ सॉल्विंग कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. यस और नो? योर सीएफओ शुड गेट इम्प्रेस्ड विद आवर प्रेजेंटेशन. करेक्ट. सो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट था जो हमने सीखा था. लेट्स से वी हैव टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड. एस्टिमेशन ऑफ एक्स लिमिटेड नहीं है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. Estimation of working capital for X लिमिटेड. ठीक है. सो हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखते थे, देन रेफरेंस ऑफ वर्किंग नोट इफ एनी, अमाउंट. ठीक है. सो पर्टिकुलर्स, वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स. तो फर्स्ट हेडिंग आपको देना है करंट असेट्स का. कैन आई से करंट असेट्स? अच्छा, बिफोर writing down the sub components or the line items,
इस चैप्टर के कुछ अजम्पशंस है. सी फ्रेंड्स, द नेम ऑफ द चैप्टर और द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज एस्टिमेशन. तो हम कहने से ऑब्वियसली हम पास्ट का तो एस्टिमेशन नहीं करेंगे, पास्ट की घटना तो घट चुकी है. एस्टिमेशन वुड बी ऑफ फ्यूचर, एंड फ्यूचर especially in 2025 is very uncertain. We don't know अगले सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है. So can I say future is uncertain? So to remove the effect of uncertainty in financial management or in any concept, we use the base of certain assumptions. ठीक है, to remove the effect of uncertainty. So इस चैप्टर के भी कुछ assumption है. क्या assumption थे इस चैप्टर के? There were certain assumptions of this chapter. Bolo, do you all recollect what were the different assumptions of this chapter? Try. Try to recollect. याद करो क्या था. We are estimating the future and future is uncertain. So हमें assumptions का base लेना ही होगा. No one is answering. Okay, let me tell you. Assumption number one was all the activities accrue evenly throughout the year. What do you mean by this assumption? What do you mean by this assumption? A very simple example. Let's say पूरे साल का हम सेल्स 12 लाख एस्टिमेट कर रहे हैं. तो बाय दिस assumption it would mean कि जैन में सेल 1 लाख होगा, फेब में 1 लाख होगा, मार्च में 1 लाख होगा, अक्टूबर में 1 लाख होगा, दिसंबर में 1 लाख होगा, नवंबर में 1 लाख होगा. आर यू फॉलोइंग? ऑल द एक्टिविटीज अक्रू इवनली थ्रू आउट देयर. मीन्स सब मंथ में एवरीथिंग वुड अक्रू इवनली सेम. Following? Next assumption was we would be estimating working capital needs of those businesses जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. सो आईसीएआई का सिंपल फंड है. सी आइडियली in a very broad terms there are three types of industries: trading, manufacturing and services. ठीक है. So ICAI का it's a very simple logic. Of these three industries, the most complex is manufacturing. Many complexities, many hardships are involved. ठीक है. So अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल समझ लिया तो बाकी दो तो सिंपल है. This is what ICI believe. ठीक है. So all the questions in your be it in your module or be it anywhere, be it any sources, सारे questions मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बेस के थे. Followed? So we would be estimating the working capital needs of businesses जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. Third was we are estimating our working capital needs for the entire 1 year period. For the entire 1 year period. See practically क्या होता है पता है? बिजनेस इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल तो कर लेते हैं. आफ्टर दैट they go with banks or financial institutions for financing their working capital needs. वो बैंक के पास या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं टू रेज द वर्किंग कैपिटल. ठीक है. सो बैंक विल नेवर प्रोवाइड यू फाइनेंस फॉर द एंटायर नीड ऑफ 1 year. No financial institution, no banks in India provides your working capital needs for entire 1 year. No, they generally provide working capital needs of 3 to 4 months, or I would say max 6 months. उससे ज्यादा तो कोई नहीं देता. Followed? But since we are into academics, we are assuming कि एक साल में जो हमें वर्किंग कैपिटल नीड्स होगी that we are estimating. Followed? ठीक है. So practically working capital estimation is done for 3 to 6 months, ranging from 3 to 6 months.
शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है. आर यू फॉलोड? बट सिंस वी आर इनटू एकेडमिक्स एंड वी आर एस्टिमेटिंग आवर फ्यूचर नीड्स, we have to take a base of certain assumptions. ठीक है? So these were the common or I would say general assumptions of this chapter. ठीक है? By default, just like you have accounting assumptions that are applied by default, इस chapter के ये assumptions by default apply होंगे, unless otherwise specified. Unless otherwise specified. ठीक है? So let's begin with current assets. तो कहने से अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कर रहे हैं. सो दिस कंपनी इज बिलोंगिंग टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. तो कहना है उसमें रॉ मटेरियल लगेगा मुझे. सो फर्स्ट वुड बी स्टॉक ऑफ, फर्स्ट इज स्टॉक. करंट असेट में फर्स्ट इज स्टॉक और उसमें नंबर वन वुड बी रॉ मटेरियल का स्टॉक. ठीक है? एंड हाउ डिड वी एस्टिमेट रॉ मटेरियल का स्टॉक? द फॉर्मूला वाज रॉ मटेरियल कंजम्पशन into RM holding period divide by 12 if you want it in months, divide by 365 if you want the answer in days, and 52 if the RM holding period is in weeks. ठीक है? So this is how we calculated stock of raw material. Yes or no? Are you able to recollect? Second was, since we are into manufacturing business, तो कहना है से कुछ स्टॉक प्रोसेस में होगा. What do you mean by process? Again a very simple understanding. Let's say मेरा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है. नाउ ये शर्ट का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है. सो कहना है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, बट पूरा शर्ट भी नहीं बना है. स्टिल द पॉकेट्स आर लेफ्ट, कॉलर बाकी है, बटन्स बाकी है. सो कहना है इट इज इन प्रोसेस. It is neither a finished goods nor in the form of raw material. It is somewhere in the between. So that is called WIP, work in progress. And work in progress में मेरे रॉ मटेरियल यूज हुए होंगे, डायरेक्ट लेबर इनकर हुआ होगा एंड अदर ओवरहेड्स इनकर हुए होंगे. आर यू फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग? So the formula is RMC. Now since we are calculating stock of WIP, here you multiply it with WIP holding period, divide by 12, 365, 52. Are you following? So direct labor ka cost into WIP holding period. HP is nothing but holding period. Divide by 12, 365, 52. And manufacturing overheads multiply by WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12, 365, 52. एंड अगर आपको याद हो तो कहना है इसे WIP अनफिनिश्ड गुड्स. सो कहना है इसे यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीशन से हम मल्टीप्लाई करते थे. यस और नो? एंड परसेंटेज कंप्लीशन इज नथिंग बट दैट परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया होता था. एंड परसेंटेज कंप्लीशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो व्हाट वाज आवर स्टैंडर्ड अजम्पशन? कैन आई से इट वाज 100, 50, 50? Yes or no? This was the standard assumptions that we followed for WIP. Are you able to recollect, students? Yes, correct. Material 100, labor and overheads 50, 50. हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई बोला है कि रॉ मटेरियल्स 90% है तो यू टेक 90%, लेबर 60% है तो यू टेक 60%. So follow the question. But in absence of percentage completion, the standard assumption is 100, 50, 50. ठीक है? So stock में मेरा रॉ मटेरियल हो गया, WIP हो गया, कहना है से कुछ फिनिश गुड्स होगा. So FG, how to calculate FG stock? It is nothing but COGS multiply by FG holding period divided by 12, 365, 52. Finished goods is always based on cost of goods sold. WIP, if you add this is nothing but your cost of production. So WIP is always based on cost of production and raw material is always based on raw material consumption. ठीक है?
Then the second component of current assets was debtors. So can I say debtors? Ideally, there are two ways to calculate debtors. One is considering cash cost basis method, और one is considering total basis method. So दोनों का difference क्या था? Can anyone tell me what was the difference between cash cost basis of working capital estimation and total basis of working capital estimation? कोई बता सकता है? Anyone wants to try? What was difference between cash cost and total basis? A very simple difference. कैश कॉस्ट बेसिस में हम नॉन कैश एक्सपेंस नहीं लेते थे एंड प्रॉफिट एलिमेंट नहीं लेते थे. आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट. आपको याद आ रहा है? क्रेडिटर्स नहीं, क्रेडिटर्स तो इंक्लूड होंगे. ये क्रेडिटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. कैश कॉस्ट मींस नॉन कैश एक्सपेंस. जैसे कहने से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में यहाँ पे डेप्रिसिएशन की इफेक्ट भी होंगी. दिस ओवरहेड्स वुड इंक्लूड डेप्रिसिएशन. सो इसमें से हमें निकाल देना है डेप्रिसिएशन. व्हाई? बिकॉज वी आर फॉलोइंग कैश कॉस्ट बेसिस. बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो डेप्रिसिएशन में कोई अमाउंट ब्लॉक नहीं होता है. आर यू फॉलोइंग? एंड सेकेंड थिंग, हाउ आर डेटर्स, how are can I say debtors are valued on sales, on credit sales? Yes or no? And can I say this sales element is nothing but cost plus profit? Sales figure कैसे होगा? Cost plus the element of profit. So can I say profit में भी मेरा कोई amount block नहीं है? My amount, yes, is definitely blocked in the cost. प्रॉफिट में आपका अमाउंट ब्लॉक है ऐसा नहीं बोल सकते. आर यू फॉलोइंग? सो व्हेन यू गो टू रेज वर्किंग कैपिटल विद द बैंक, तो बैंक विल नॉट फंड यू फॉर प्रॉफिट. एक तो आपका वो सरप्लस है और वो भी आप बैंक से फाइनेंस करके ले रहे हो. सो अगर बैंक आपको प्रॉफिट फाइनेंस करके ले दे रही है, सो बैंक शुड क्लोज इट्स बैंकिंग लाइसेंस. दे शुड सरेंडर. बिकॉज एक तो ये तो है सरप्लस एलिमेंट एंड यू आर फंडिंग दैट एज वेल. So you are very smart, but bank has to, I feel, surrender their banking license because no bank will finance you for profit. Are you following? हाँ, they finance you for the amount that is blocked in your business. So amount क्या block होगा? Can I say depreciation में amount block होगा? No, it is a non-cash expense. So bank will also see कि ऐसे non-cash expense कौन से है जो आपके जेब से पैसा गया ही नहीं है. Are you following? So if we are following cash cost basis, our debtors will be valued on cost of sales and not on sales figure. ठीक है? So cost of sales into debtors credit period बोलो, collection period बोलो या holding period बोलो. Ideally, we say debtors collection period. Divide by 12, 365, 52. Following? And if you are following total basis, then our debtors will be valued on total sales, total credit sales. ठीक है? So this cost of sales is for credit sales. And if you are following, so this is for cash cost basis. And this is for total basis. Debtors collection period divided by 12, 365, 52. ठीक है? So this is for total basis approach for estimation of working capital needs. Now my question to you, थोड़ा सोचो और बताओ कौन सा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा? Which basis would be more practical? क्या लग रहा है? What is your expert's opinion? Share your expert view. Obviously, cash cost basis is found to be more practical. Because why would someone fund us for non-cash expense?
or why would someone fund us for profit which is over and above cost? प्रॉफिट में तो हमारा कोई पैसा ब्लॉक नहीं हुआ है. सो प्रैक्टिकल अप्रोच इज कैश कॉस्ट बेसिस. अब सवाल आता है एग्जामिनेशन का. सर हमें एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में दे विल स्पेसिफाई इन द क्वेश्चन कि विच मेथड यू हैव टू यूज. सर अगर क्वेश्चन में मेंशन किया ना हो तो देन दे वुड गिव सम इनडायरेक्ट हिंट्स. इनडायरेक्ट हिंट्स कैसा पता है? कि लेट्स से एक्स लिमिटेड wants to raise funds from the financial institution for its working capital needs. ऐसा सब लाइन आएगा ना तो आपको दिमाग में ये याद रखना है कि बैंक विल नेवर फंड फॉर नॉन कैश एक्सपेंस एंड बैंक विल नेवर फंड फॉर प्रॉफिट. सो क्वेश्चन इज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू से दैट फॉलो कैश कॉस्ट बेसिस. सो ये सब लाइन से आपको इंटरप्रेट करना है. सर ऐसी भी कोई लाइन ना दी हो तो, इनडायरेक्ट हिंट्स भी ना दिए हो तो सर क्या करें? So in that case, you are free to use any method, but you just write the notes after your solution. ठीक है? That we have followed cash cost basis or we have followed total basis for our calculations. Alternatively, other way can also be used. Followed? But I would suggest, I would highly recommend you use this way, this method because it is more practical and logical. ठीक है? So debtors हो गया. फिर हमारा आता था कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश एंड बैंक बैलेंस वाज आइडियली डायरेक्ट फिगर गिवन इन द क्वेश्चन. फॉलोड. सो दिस आर द जनरल लाइन आइटम्स ऑफ करंट असेट्स जो सारे क्वेश्चन में होते थे. हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, सो वी टेक इट अकॉर्डिंगली. अब करंट असेट्स में हम माइनस क्या करते थे? करंट लायबिलिटीज. ठीक है? सो करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट वाज क्रेडिटर्स. Now creditors are always based on credit purchases. Please focus. Raw material is based on raw material consumption, but creditors will be based on credit purchases. Followed? In manufacturing industry मेरा purchase is raw material ही होगा ना. So हमें raw material consumption का amount नहीं लेना है, ये वाला फिगर नहीं लेना है. दिस इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन. एंड ये फिगर कैसे आया होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स विच गिव्स यू रॉ मटेरियल कंजम्पशन. ठीक है? सो हमें ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल परचेज लेस क्लोजिंग विल गिव यू रॉ मटेरियल कंजम्पशन. सो क्रेडिटर्स के लिए हमें ये फिगर लेना है. Followed? In most of the case, RMC will be equal to raw material purchase. Why? Because of our standard assumption number one कि all activities accrue evenly throughout there. उस assumption के कारण हमारा opening stock और closing stock same होता था. So raw material purchase becomes my raw material consumption. ठीक है? When we use assumption number one. But there were many questions जिसमें ये assumption fail होता था because specific information was given in the question. So उस केस में हमें ये formula apply करनी है. Followed? So for example, if there is a newly incorporated company, तो कहना है उसमें opening stock नहीं होगा कुछ भी because it is a newly formed company, but closing stock definitely होगा. So raw material purchase and raw material consumption का amount अलग होगा. Followed? So we have to read the question very carefully and decide. Understood? So creditors are based on credit purchases and we multiply it with average payment period divide by 12, 52, 365. फिर there were some outstanding expenses if given in the question. So outstanding expenses is nothing but जो जो एक्सपेंस है उसका हम अमाउंट लेंगे मल्टीप्लाई बाय द टाइम लैग इन पेमेंट. लेट्स से वेजेस आर आउटस्टैंडिंग फॉर हाफ अ मंथ, so time lag in wages would be 0.5. Let's say time lag in payment of overheads is 1 month, so overheads का time lag would be 1 month, means multiply by 1 by 12. I hope you are following.
So if we subtract current assets from our current liability, acha, first of all, the sum of current asset technically is termed as gross working capital. Total of all the current assets is called as gross working capital. उसमें से हम करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो हमें मिलता है सरप्लस ऑफ, और आई वुड से एक्सेस ऑफ current assets over current liabilities. Excess of current assets over current liabilities. फिर उसमें हम कुछ मार्जिन ऐड करते थे, सेफ्टी मार्जिन. वाई? सेफ्टी मार्जिन ऐड करने का पर्पस एक ही था कि ये जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया ना, दिस इज एन एस्टिमेट, करेक्ट? सो देयर आर चांसेस कि हमारा एस्टिमेट रॉन्ग भी हो सकता है. Followed? So on a safer side, we add some margin. We be some conservative. We take some conservative approach and add some margin. And the resultant figure was called as net working capital needs. Net working capital needs. Are you following? So this was our format of working capital and how to solve each component. How to solve each component. उसकी फॉर्मूला भी लिख दी. Now to find the value of each component, मान लो मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन मुझे कौन से स्टेटमेंट से मिलेगा, ये फिगर मुझे कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट से मिलेगा, और ये क्रेडिट परचेजेस मुझे कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट से मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सीओजीएस, ऑल दिस वेरिएबल्स मुझे कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट से मिलेंगे. तो कहने से ऑल दिस आई विल गेट इन अ कॉस्ट स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट. आप कॉस्ट स्टेटमेंट बोलो, कॉस्ट शीट बोलो, इनकम स्टेटमेंट बोलो, इट इज वन एंड द सेम. So the base of working capital estimation, the base document, the source document, can I say it is your income statement or cost statement? ये सारी values मुझे cost statement, income statement, cost sheet से मिलेगी. So if you remember, इसके बाद हम cost statement working note में बनाते थे. Our working note 1 was always used to be preparation of cost statement. कॉस्ट स्टेटमेंट इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारा ये कॉस्ट स्टेटमेंट इज समवॉट सिमिलर टू योर कॉस्ट शीट दैट यू हैव लर्नड इन कॉस्टिंग. ठीक है? इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज इनकम स्टेटमेंट, नथिंग रॉन्ग इन दैट. फॉलोड? सो हम कॉस्ट स्टेटमेंट बना देते. आर यू गेटिंग दिस फ्रेंड्स? फॉलोड? इसके बाद सो दिस वाज ऑल अबाउट एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे आरटीपी से, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रेम्ड. ठीक है? वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट एंड यू विल ऑल रिकलेक्ट और आई वुड से मेमोराइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स. आपको याद आने लगेगा. उसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल. वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल. What was this concept all about? बताओ. What was this concept all about? It is a process, a simple process of converting cash back into cash. It is a process of what? Converting cash back into cash. Means आज मैं एक जेब से कैश निकाल रहा हूं और मेरे सप्लायर्स को दे रहा हूं, तो ये कैश वापस घूम के मेरे पास जब आएगा ना, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल. Faster the company will be able to free up its cash. So that is a good sign. But operating cycle का मतलब क्या? This was what I was asking. So what you told is a good sign of running the business. But operating cycle is nothing but a process of converting cash. Cash को वापस cash में convert करना is working capital operating cycle. ठीक है? ऐसा समझो, लेट से आज मैंने कैश लेके मैं मार्केट में गया
एंड मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदा. सो कैन आई से आई हैव गिवन द कैश टुडे. मेरे जेब से आज ये कैश चला गया. एंड कैश इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल. ये वो कैश अब कौन से रूप में है? रॉ मटेरियल के रूप में है. अब रॉ मटेरियल लेके मैं मेरे बिजनेस में मैं मेरे फैक्ट्री या गोडाउन में आया. कुछ टाइम के लिए उसको मैंने स्टोर किया, बिकॉज सीधा आते ही मैं मशीन में तो नहीं डालूंगा. सो रॉ मटेरियल ने WIP का रूप लिया फिर. सो आई एंटर्ड रॉ मटेरियल्स इनटू मशीनरी. सो नाउ माय कैश which was in the form of raw material is now in the form of WIP. ठीक है, WIP में प्रोसेस चल रहा है एंड बन गया फिनिश गुड्स. सो कैन आई से नाउ माय कैश जो रॉ मटेरियल के रूप में था, फिर थोड़े दिन के लिए प्रोसेस में था, अब वो फिनिश्ड गुड्स के रूप में. फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग? ये जैसे ही मेरा फिनिश्ड गुड्स रेडी हो गया, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइन लगा के कस्टमर्स बाहर बाहर खड़े होंगे फैक्ट्री के बाहर लाइन लगा के? ये नेवर. फिनिश गुड्स को सेल करने के लिए भी टाइम लगता है. आर यू फॉलोइंग? सो फिनिश गुड्स भी हम जैसे प्रोडक्शन होगा कुछ टाइम के लिए वो मेरे गोडाउन में रहेंगे. एंड आफ्टर दैट आई विल सेल इट टू माय कस्टमर्स. एंड कस्टमर्स को कहना है आई विल से डेटर्स. फॉलोड? एंड ऑब्वियसली डेटर्स विल नॉट पे टू मी ऑन द स्पॉट. आज गुड्स लिया आज ही पैसे दे देंगे? नो. दे विल आस्क फॉर सम क्रेडिट. बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस सब क्रेडिट देते हैं. सो कैश जो मेरा रॉ मटेरियल के रूप में था वो धीरे धीरे प्रोसेस में आ गया. धीरे धीरे वो FG बन गया. धीरे धीरे वो डेटर्स के पास चला गया इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स. एंड आफ्टर फ्यू टाइम्स वो वापस कैश मेरे पास आ गया विद प्रॉफिट. आर यू फॉलोइंग? सो दिस एंटायर साइकिल इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल. ठीक है. सो द टाइम टेकन और द ड्यूरेशन टू कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस, डे 1 से लेके लेट्स से डे 90 पे मुझे वापस पैसा आ रहा है. सो दिस 90 डेज का साइकिल इज कॉल्ड एज ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. आर यू एबल टू विजुअलाइज? आज मैंने कैश निकाला, आज मैंने सप्लायर को पैसा भर दिया. सो डे 1 आज से स्टार्ट हो गया. एंड वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ from debtors with profit I'm getting back after 90 days. So can I say entire cycle, ये cycle को पूरा complete करने में 90 दिन लग गए. So 90 days is called as nothing but duration of operating cycle. The financial management is very practical subject. You have to just visualize correctly in your minds. Followed? And how do we calculate duration of operating cycle? तो उसकी formula दी. It is nothing but RM holding period plus WIP holding period plus FG holding period plus debtors collection period and less creditors payment period. So the resultant figure is called as duration of net duration of operating cycle. Followed? Anyone doubts in this concept? Duration, sorry, working capital operating cycle and its duration. बोलो इसमें कोई क्वेरी है? समझ रहा है सबको? हाँ, so as Samriddhi rightly said that faster the company will be able to free up its cash, it is a good sign on the management of working capital on the part of the company. Followed? So जितना कैश मुझे जल्दी, ये पीरियड जितना कम उतना मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है. Followed? Any doubts, students? Any questions? Any queries? Any concerns? Okay, no response. I will move forward. Third part of the chapter was financing of working capital.
Once the estimation part is done, our next question as a financial manager would be, अब हम ये पैसा लाए कहाँ से? How would we finance our working capital? So financing of working capital. So उसके लिए पहले हमने वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, उसके दो भेद कर दिए थे. वन इज फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड वन वाज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. सो कुछ फाइनेंशियल स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल that is needed at any time in the business. It remains fixed, but temporary working capital may fluctuate. So कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि आप फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है ना, जो आपको परमानेंटली बिजनेस में चाहिए ही, यू कैन रेज इट थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस. सो दिस वाज अ जनरल स्टेटमेंट गिवन बाय देम. हमें हमारी कंपनी के स्पेसिफिक नीड्स देखने पड़ते हैं, बट दिस वाज जनरल एक्सप्लेनेशन दैट दे हैव सेड. And temporary working capital, since it is needed for short period of time, you raise it through short term sources. ये उनका मानना था. ठीक है. Now what do you mean by fixed working capital, temporary working capital? Again I gave you the example of ice cream parlor. कहने से मेरे आइसक्रीम पार्लर का बिजनेस है, मीन्स राउंड द ईयर आई एम सेलिंग, मेकिंग एंड सेलिंग आइसक्रीम्स. सो कहने से राउंड द ईयर मुझे कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगा ही लगेगा परमानेंटली. एंड ड्यूरिंग समर सीजन्स और ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट सीजन्स आई वुड नीड मोर वर्किंग कैपिटल. यस और नो? व्हाई? बिकॉज समर सीजन में आइसक्रीम की डिमांड हाईएस्ट होती है. सो आई वुड नीड मोर स्टोरेज ऑफ आइसक्रीम्स. मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा आइसक्रीम का. सो ड्यूरिंग समर सीजन्स आई वुड नीड मोर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है. एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन्स कोई मेरे दुकान में आएगा ही नहीं. सो ड्यूरिंग दैट केस आई वुड नॉट नीड मच ऑफ टेम्पररी कैपिटल. फॉलोड? सो टेम्पररी और शॉर्ट टर्म और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल इज आइडियली रेज्ड थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेस बिकॉज वो फ्लक्चुएट होते रहता है. सो यू रेज एज पर योर नीड्स. whereas fixed working capital और permanent working capital is the working capital जो हर वक्त आपको बिजनेस में लगेगा ही लगेगा. सो कुछ फाइनेंशियल स्कॉलर्स बोलते हैं कि उसको आप अच्छे से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज करो. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट वी लर्न इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था? हमने पढ़ा था रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. Receivables management was all about managing your customers efficiently. Understood? Can I say receivables, debtors? Receivables means debtors. Debtors का जन्म कहाँ से होगा? अगर क्रेडिट सेल्स है तो ही डेटर्स है, वरना डेटर्स का क्वेश्चन ही नहीं आता. सो डेटर्स अराइजेस फ्रॉम क्रेडिट सेल्स. ठीक है. सो नाउ टेल मी फ्रेंड्स, क्रेडिट सेल्स के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ बेनिफिट्स है, बट सामने कुछ डिसएडवांटेजेस है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट. क्रेडिट सेल्स का एडवांटेज क्या होगा? टेल मी. लेट्स से देयर आर टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वन जो कैश सेल्स ही करता है एंड वन हु गिव्स क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स. तो किसका सेल्स ज्यादा होगा? There are two companies A and B. A entirely 100% does cash में sales, means आज मान लो, आज पैसा दो. B gives some credit to its customers. Tell me, तो किसका सेल्स ज्यादा होगा? किसके पास लोग ज्यादा जाएंगे? बी कंपनी के पास. सो कहने से क्रेडिट सेल्स है तो योर रेवेन्यू विल राइज, एंड इफ रेवेन्यू राइजेस योर इन टर्न प्रॉफिट विल राइज. सो ये एक फायदा है
of having credit sales in your business. Followed? But credit sales है तो उसके कुछ नुकसान भी है. Can I say I have to bear certain administration cost now? ये पहले तो कस्टमर्स गुड्स लेते थे और कैश दे देते थे, बट अब पैसा नहीं दे रहे ऑन द स्पॉट, एक महीना 2 महीना बाद दे रहे. तो उनको याद कराने के लिए मुझे एक टीम बिठानी पड़ेगी who does continuous follow up to the customers for payments, for sending emails for payments. So कहने से मेरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा. मुझे 2% स्पेसिफिक बिठाने पड़ेंगे who just does this रिसीवेबल का काम, वसूली का काम. फॉलोइंग? सो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ेगा. क्रेडिट सेल्स है तो बैड डेट्स भी हो सकते हैं. कैश सेल्स में देयर इज नो स्कोप ऑफ बैड डेट्स, नो वन विल रन अवे. बट क्रेडिट सेल्स है तो कोई भाग भी सकता है विदाउट पेइंग. सो बैड डेट्स. क्रेडिट सेल्स है तो कलेक्शन कॉस्ट है, एंड क्रेडिट सेल्स है तो डिस्काउंटिंग कॉस्ट है. सर डिस्काउंटिंग कॉस्ट कैसे? ए कैन आई से क्रेडिट सेल्स है, लेट्स से आई गिव 60 days ऑफ क्रेडिट टू माई कस्टमर्स. अब मैं उनको बोलता हूँ कि आप, या चलो मान लिया 60 days तो मैंने दिया, आई अग्रीड. बट अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देते हो तो आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट. सो कहने से क्रेडिट सेल्स है तो डिस्काउंटिंग कॉस्ट भी आ सकता है. यस और नो? इफ आई आस्क माई कस्टमर्स टू पे इट अर्ली तो डिस्काउंटिंग कॉस्ट भी आ सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, cost of carrying debtors. Cost of carrying debtors. Have you heard this term before? Obviously sir, आपने पढ़ाया था रेगुलर लेक्चर्स में. Cost of carrying debtors is nothing but opportunity cost of investment in debtors. Let's say my debtors का credit period is 60 days. Sorry, let's take example of 30 days. तो कहना है से आज मैंने सेल किया कस्टमर को, टुडे इज डे 1, दिस इज अ सेल डेट. इसका पैसा मुझे ऑन 30th डे मिलेगा आइडियली, डेट ऑफ रिसीविंग मनी. यस और नो? सो इन टर्न कैन आई सी 30 दिन के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो गया है. यस और नो? For 30 days, from day 1 to day 30, my amount is blocked in my customers. But I want my money. I cannot afford this to get blocked for even 1 day for smooth running of my business. Followed? तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 दिन के लिए मुझे पैसा अरेंज करना पड़ेगा कहीं और से. So this is the amount blocked. करेक्ट? सो ये 30 दिन के लिए मुझे कहीं और से अमाउंट अरेंज करना पड़ेगा फॉर माई स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड कि मेरा पैसा ये ब्लॉक रहे, वरना बिजनेस ही अटक जाएगा. फॉलोड? सो क्या ऑप्शन है? ये मैं पैसा जो ब्लॉक हो गया है वो कहां से रेस करूं? कैन आई से आई हैव टू ऑप्शन, आइदर आई इन्वेस्ट माई ओन फंड्स, एंड ओन फंड्स विल कम विद opportunity cost of losing return on investment somewhere else. Yes or no? Or either I will borrow from the bank and invest in my business. And can I say, agar if I'm borrowing, I have to pay interest to the bank for 30 days. बट इफ आई एम, सर अच्छा यहाँ तो समझ गया सर, आपने लोन ली और इन्वेस्ट किया बिजनेस में, सो यू विल पे इंटरेस्ट. बट सर यहाँ तो आपका खुद का फंड ला रहे हो, उसमें कहाँ इंटरेस्ट आएगा? ए बट कहना है से मैं खुद का फंड इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व. ये अगर मैं यहाँ ये बिजनेस में इन्वेस्ट ना करता तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड समवेयर एल्स. तो समवेयर एल्स से मुझे कुछ रिटर्न मिलता, but now I would not earn those return. Why? Because I'm investing here in my own business. So I'm losing that opportunity to earn some return elsewhere. So that is the interest percentage over here, which technically we term it as opportunity cost percentage. Followed? So this was cost of carrying debtors. So if you remember, cost of carrying debtors के लिए we followed two steps.
दो स्टेप में कैलकुलेट करते थे. स्टेप वन वॉज कैलकुलेट डेटर्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स. ये पहले डेटर्स में अमाउंट कितना ब्लॉक है वो तो कैलकुलेट करो. सो स्टेप वन वॉज कैलकुलेटिंग योर डेटर्स. एंड हाउ डिड वी कैलकुलेट डेटर्स? कैन आई से डेटर्स वॉज नथिंग बट cost of sales into average collection period divided by 12, 365, 52. ठीक है. Second step was applying interest percentage or opportunity cost का percentage, whatever is given in the question. Applying rate of return का percentage on above calculation, on above datas. So with this, with a simple two steps, we used to calculate cost of carrying datas. So once we are able to calculate the amount of benefit, and once we calculate all the cost including COCD, उसके बाद हम क्या करते थे, हम फाइंड करते थे कि हमारा नेट बेनिफिट क्या पॉजिटिव आ रहा है. इफ यस, then you should go with the credit policy. So in this chapter हमारा objective क्या होता था? There were different credit policies given to you for evaluation. Let's say credit policy 1 was for 30 days, credit policy 2 for 45 days, credit policy 3 for 75 days. So you used to evaluate different credit policies, जिसमें जो credit policy में net benefit सबसे ज्यादा, can I say we used to select that credit policy? Yes or no? And net benefit कैसे calculate करते हैं? It is nothing but benefits less cost. Are you able to recollect, students? So receivables management में हमारा first learning outcome क्या होता था? Evaluation of different credit policies and selecting the best one. Followed? Any doubts, any concerns, any issues, any queries? See, this chapter is very huge, but we have some time constraints, so I have to move very quickly. एक concept से दूसरे concept पे जाने के लिए I have to move very fast because I have to solve some practical problems as well. No doubts, clear? ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था? फैक्टरिंग सीखा था. एंड व्हाट वाज फैक्टरिंग का मीनिंग? फैक्टरिंग इन सिंपल टर्म्स, it is nothing but outsourcing your collection process. Selling of goods is one thing, वो important है, बट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. आप सेल करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो बिजनेस में, बट कलेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो कैन आई से योर बिजनेस विल नॉट रन एफिशिएंटली. पैसा आना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेवेन्यू कर देने से बिजनेस ऊपर नहीं जाता. कलेक्शन ऑफ दैट सेल अमाउंट is equally important. Now let's say you are very much busy into your core operations. आपको सिर्फ कोर ऑपरेशंस में ही फोकस करना है, आपके पास कलेक्शन प्रोसेस के लिए कोई टाइम ही नहीं है. Then there are some professionals like banking and financial institutions who provide this service of outsourcing. They would come to you and say, कोई बात नहीं, आप अपने कोर बिजनेस पे फोकस करो, we will help you in the entire collection process. आपके सारे रिसीवेबल्स की लिस्ट हमें दे दो, we will follow up with the customers on your behalf and we will help you in the collection process. Followed? So that in simple terms is called factoring, outsourcing of your collection process in a very simple terms. So this service is generally provided by financial institutions and banks. ठीक है. क्या वो फ्री में ये सेवा देंगे? No, they will charge certain fees, which we technically called it as factoring fees or factoring commission. Let's say they are able to collect
60 lakhs of your total sales amount from customers. So उस पे 1% 2% will be their factoring commission or factoring fees. ठीक है? Are you following? So this is all about factoring. अच्छा, factoring में one more thing. कुछ फैक्टर्स है ना, सिर्फ ये आउटसोर्सिंग का काम नहीं करके देते, दे ऑल्सो फंड यू, दे ऑल्सो गिव यू द फंड्स. एक कहना ऐसे डेटर्स है तो अमाउंट वुड बी ब्लॉक्ड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, यस और नो. मान लो अगर आप कलेक्शन प्रोसेस करते तो 60 डेज होता कलेक्ट करने में. मान लो इफ यू आर हैविंग योर इन हाउस कलेक्शन टीम, तो दे आर एबल टू कलेक्ट लेट्स से विद इन 60 डेज. इफ फैक्टरिंग के पास जाओगे तो क्या वो फर्स्ट डे पे ही दे देगा कलेक्ट करके? नो, दे विल ऑल्सो नीड सम टाइम ना. हाँ, 60 डेज नहीं, बट 45 डेज 50 डेज, कुछ समय तो उनको भी कलेक्शन करने में लगेगा. यस और नो? सो टिल दैट पॉइंट इन टाइम कैन आई से योर अमाउंट इज ब्लॉक्ड. पहले 60 डेज के लिए होता था, बट अब 45 डेज के लिए होगा. सो अगेन यू कैन नॉट अफोर्ड दैट योर अमाउंट गेट्स ब्लॉक्ड इन द बिजनेस, वरना वो स्मूथ फ्लो नहीं चलेगा बिजनेस का. सो अगेन कैन आई से फॉर 45 डेज यू हैव टू स्टिल अरेंज फॉर द फंड्स. आर यू फॉलोइंग? आर यू एबल टू विजुअलाइज? तो फैक्टरिंग क्या बोलता है, सर उसकी चिंता भी आप क्यों कर रहे हो, हम 45 डेज के लिए हम ही आपको फंडिंग करके देते हैं ना. आर यू फॉलोइंग? सो फैक्टरिंग कमीशन के साथ साथ some factors also provide you the funds that is blocked or that is needed for you. So can I say they will charge some interest on that? Yes or no? So factoring commission के साथ साथ in that case there would be interest on net advances from factor. Students, any doubt? So factoring वाले क्वेश्चन में और फैक्टरिंग वाले कॉन्सेप्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें एक ही चीज कैलकुलेट करनी थी. अगर हम सारा कैलकुलेशन और अगर हम सारा कलेक्शन प्रोसेस इन हाउस करते तो व्हाट वाज आवर नेट बेनिफिट. एंड अगर हम ये प्रोसेस पूरा फैक्टरिंग को दे देते हैं तो व्हाट इज आवर नेट बेनिफिट. सो जिसमें ज्यादा वी विल गो फॉर दैट. आर यू फॉलोइंग? दिस इज मोर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग कि अगर हम पूरा कलेक्शन इन हाउस हमारे कंपनी से ही करवाते तो व्हाट इज द नेट बेनिफिट, लेट्स से 10 lakhs. एंड अगर हम पूरा प्रोसेस फैक्टरिंग को आउटसोर्स कर देते हैं एंड उससे हमारा नेट बेनिफिट 12 लाख हो रहा है टू द फर्म, सो वी विल, it is better that we don't go for in-house collection, we outsource this process to factory. So this was what we used to calculate in factoring wala concept. Following? Are you following? Any doubts? So receivables management, ideally, there are two main parts to be learned. One is evaluation of different credit policies and selecting the best one. Second was factoring and in-house collection process. किसमें फायदा ज्यादा? Yeah, I will do consider. ठीक है. So this was all about factoring. Third part of management of working capital was cash and treasury management. इस चैप्टर में हमने कैश बजटिंग करना सीखा था. Yes or no? Preparing and forecasting of cash budget means forecasting of your future cash needs. मान लो मुझे आज ये पता है कि मुझे 6 महीने के बाद एक नया प्रोजेक्ट लेना है विच इज वेरी ल्यूक्रेटिव, तो पहले मुझे ये कैलकुलेट तो करना पड़ेगा कि 6 महीने बाद मेरे पास फंड्स कितने हो गए, हाउ मच लिक्विडिटी आई वुड बी होल्डिंग इन माई फर्म आफ्टर 6 months. सो उसके लिए हम बजट बनाते थे. फॉलोड? एंड अदर पार्ट वॉज कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम कैश बैलेंस. इसमें हमने विलियम बॉमल मॉडल ऑफ कैश बैलेंस सीखा था. विलियम जे बॉमल मॉडल ऑफ ऑप्टिमम कैश बैलेंस means at any given point in time what is the ideal cash balance that company should keep
तो विलियम जे बॉमल मॉडल ने एक फॉर्मूला बताई थी, जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फॉर्मूला है, ऑप्टिमम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की फॉर्मूला। इट इज नथिंग बट 2AO अपॉन टी, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन टी। एंड इसका पूरा लॉजिक डिटेल यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एंड मैंने कैश मैनेजमेंट में भी इसका लॉजिक काफी हद तक समझाया था इन माय रेगुलर बैचेस। ठीक है, सो अगेन वी विल नॉट waste our time in understanding the entire concept again, but simple William J. Baumol model is all about optimum cash balance. कंपनी को आइडियली, और व्हाट इज द बेस्ट कैश बैलेंस कंपनी शुड कीप एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, सो ये फॉर्मूला लगा के हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट करते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैश मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एज आई टोल्ड यू, it is very much covered in detail in your costing and management accounts का पेपर। so financial management FM पेपर से उसको हटा दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेबल्स मैनेजमेंट। पेबल्स मैनेजमेंट, just like managing your receivables is important, पेबल्स को भी efficiently मैनेज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। यस और नो? रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में अ सिंपल लेमन लॉजिक वाज जितना पैसा जल्दी आ सके उतना बेटर। वेरेस पेबल्स मैनेजमेंट में क्या होगा, जितना कंपनी पेमेंट डिले कर सके उतना कंपनी के लिए फायदा है एज फार एज मॉनेटरी वैल्यू इज कंसर्न। बट कहने से जितना आप डिले करोगे उतना आपकी क्रेडिट इमेज डाउन होगी। सो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी कंसिडर करने होते हैं। सो व्हाट, at what time company should pay? Let's say credit given by the supplier is 60 days, तो क्या हमें पूरा 60 days क्रेडिट अवेल करके पेमेंट करना चाहिए, या वी शुड पे अर्ली, लेट्स से इन 20 days, एंड अवेल सम कैश डिस्काउंट? सो पेबल्स मैनेजमेंट में हम ये सीखते थे कि क्या हमें सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट करके डिस्काउंट लेना फायदेमंद है, या यूटिलाइज द फुल क्रेडिट पीरियड, एंजॉय द फुल क्रेडिट पीरियड, वो फायदेमंद है। आर यू फॉलोइंग? सो इसमें दो चीज इवेल्युएट होती थी, वेदर टू अवेल द डिस्काउंट और नॉट टू अवेल द डिस्काउंट। फॉलोड? जिसमें कंपनी का बेनिफिट, नेट बेनिफिट ज्यादा, वी शुड सिलेक्ट दैट। आर यू फॉलोइंग? आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट। एंड उसमें एक पूरा प्रॉब्लम भी मॉड्यूल से हमने सॉल्व किया था। सो पेबल्स मैनेजमेंट वाज ऑल अबाउट whether to avail the discount from the supplier and pay it early, इसमें फायदा ज्यादा है, इसमें बेनिफिट ज्यादा है, और एंजॉय द फुल क्रेडिट एंड पे ऑन द लास्ट डे, मींस डोंट अवेल द डिस्काउंट, उसमें फायदा ज्यादा है। फॉलोड? सो दिस वाज अ क्विक conceptual revision of management of working capital. Now, once the concepts are cleared, we can hit on the practical problems. बोलो, एनी डाउट स्टिल यार स्टूडेंट्स? इसमें कोई क्वेरी है? एंड दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे कवर होते हैं। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, डू यू हैव एनी कंसर्न्स, एनी क्वेरीज? आर यू ऑल एबल टू रिकलेक्ट, रिमेंबर? ठीक है, सो इफ वी आर थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, नाउ टेक सम, लेट्स टेक सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, फ्रॉम आरटीपी, एंड दोज आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स। सो मई 2025 अटेम्प्ट की आरटीपी में देयर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 9, अ वेरी गुड क्वेश्चन।
Management of Parshvam Limited is planning to expand its business at international level and consults you for preparing and estimating the working capital needs so that they can avail finance from the bank. So देखो, this is the indirect hint that question is giving to you कि हम फाइनेंस के लिए बैंक के पास जा रहे हैं. तो will bank fund you for non cash expense? Absolutely not. Will bank fund you for profit? If they, then they should surrender their banking license. ठीक है? So no bank funds you for the profit. Followed? So यहाँ पे हमें indirectly cash cost लेना है. Followed? Cash cost basis method follow करनी है. The estimated data reveals the following. Since उनको international business में expand करना है, so there is materials, domestic materials and imports on 3 months credit. There is a star mark over here, तो नीचे कुछ इसकी इंफॉर्मेशन अलग से दी होगी. Lag in payment of wages 1 month 6 lakhs. ठीक है? So outstanding wages is 1 month. Lag in manufacturing overheads half a month 26 lakh 40,000. Sales domestic on 1.5 months credit, export on 3 months credit, sale price 10% below domestic price. ठीक है? So just to boost our export sales, हमने उसकी सेल प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से थोड़ी कम रखी है so that we get more and more international customers and we can expand our international business. Admin expense payable in advance. So can I say admin is prepaid for 2 months? Lag in S&D expense. S&D is selling and distribution. So outstanding selling and distribution. Advance income tax of 25,000 is paid by the company. तो अगेन ये प्रीपेड में आ जाएगा, करंट असेट में आ जाएगा 25,000 रुपीज. Manufacturing overheads is inclusive of depreciation on the new machine purchased for a tailor-made export products. ठीक है? So हमने एक मशीन खरीदी है just for manufacturing export product, export quality product. तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आप देख रहे हो ना 2640, इसमें डेप्रिसिएशन का एलिमेंट इंक्लूडेड है. दिस इज व्हाट द लाइन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. एंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो हमें डेप्रिसिएशन की इफेक्ट निकालनी पड़ेगी इसमें से. फॉलोड टू कैलकुलेट आर estimation of working capital needs. The purchase price is 24 lakh with a depreciation rate of 10%. So कहने से मेरा depreciation amount 2,40,000 इसमें होगा अंदर जो हमें निकालना पड़ेगा. Followed. Cash GP is at 20% on domestic sales. So GP ratio is given. GP is always on sales 20%, but cash component of GP, not the total GP. However, to promote exports, Export Promotion Council EPC board provides a revenue subsidy of 2.5% for the new machine purchased. Now this is very important. To promote exports, there is a board called EPC board. तो वो क्या कर रही है कि ऐसा जो एक्सपोर्ट सेल्स करते हैं ना उसको सब्सिडी मिलती है. And here the EPC board is providing revenue subsidy. See, there is two types of subsidy for your general knowledge. One is CAPEX subsidy. CAPEX means subsidy that you get on your capital expenditure. And one is revenue subsidy that you get subsidy on your manufacturing expenses. Followed? So this is revenue subsidy. Means आपका जो manufacturing overheads है ना, इसमें से गवर्नमेंट इज रीपेइंग यू 2.5%. आर यू फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग? सो दिस इज रेवेन्यू सब्सिडी. अगर ये केपेक्स सब्सिडी होता तो कहना है ये मेरा 24 लाख का मशीन मुझे 24 लाख में नहीं पड़ता, 24 लाख माइनस 2.5% हो जाता, बिकॉज 2.5% गवर्नमेंट इज रिफंडिंग मी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी इफ द सब्सिडी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. आर यू फॉलोइंग? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हम ये मशीन से माइनस कर देते हैं तो कहने से मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा. यस और नो? स्टूडेंट्स, डिड यू गेट दिस पॉइंट? इज दिस क्लियर? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
दिस इज द रेवेन्यू सब्सिडी, मीन्स आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कुछ फायदा होगा, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीन। हाँ, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी होता तो कॉस्ट ऑफ मशीन में फायदा होता। कॉस्ट ऑफ मशीन में फायदा मींस कहने से अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन में फायदा हो जाता, मींस डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाता। Followed. So this was very important. Furthermore, Parshvam submits the letter of credit to its bank and avails all export sales value within 1 month. Financial institution charges 5% for the same. So ideally देखो, now this is also equally important. Ideally देखो, अगर हम नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा 3 महीने बाद मिलता, बट देर इज अ क्विक फाइनेंसिंग सोर्स कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। हमें इंपोर्टर से एक लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया तो कहने से वो लेटर ऑफ क्रेडिट में तुरंत दौड़ के मेरे बैंक के पास लेके जाऊंगा, एंड बैंक इज सेइंग कि ठीक है आप लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आए हो, तो आपके लिए हम 3 महीना नहीं, हम 1 महीने में ही आपका पैसा दे देंगे एक्सपोर्ट का। सो फॉर अस, कहने से माई कलेक्शन पीरियड, ध्यान से सुनना, माई कलेक्शन पीरियड for export customers would not be 3 months, it would be 1 month. Why? Because we are taking the benefit of letter of credit finance. Are you following? हाँ, उसकी कुछ फीस लगेगी, 5% वो भर देंगे, बट मुझे मेरा पैसा 1 मंथ में वापस आ रहा है फ्रॉम बैंक। Are you following? So my amount blocked in export sales is not 3 months, it is 1 month, because I am using लेटर ऑफ क्रेडिट एंड आई एम अवेलिंग द सेल वैल्यू विद इन 1 मंथ। तो मेरे 1 मंथ के लिए पैसा ब्लॉक हो रहा है। हाँ, उसकी कुछ फीस है वो भर देंगे। द कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सो दिस इज RM होल्डिंग पीरियड। फिनिश गुड्स ऑल्सो 1 मंथ, सो FG होल्डिंग पीरियड। गुड्स रिमेन इन प्रोसेस फॉर हाफ अ मंथ, so half a month is WIP holding period with 90% raw material introduced in the process. हमारा स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या था? रॉ मटेरियल वॉज 100% कंप्लीट, करेक्ट, बट इन दिस केस इट इज 90%, एंड बाकी का 50-50, लेबर 50, ओवरहेड्स 50। फॉलोड। कंपनी बिलीव्स इन कैश बैलेंस, कीपिंग कैश बैलेंस ऑफ 150, ठीक है। मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन सेफ्टी मार्जिन इज 15%, ठीक है, वो लास्ट में ऐड कर देंगे। हाँ देखो, ये ऊपर इंपोर्ट के लिए जो एस्ट्रिक था ना, उसकी इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है। क्या दी है? raw materials imported will attract a custom duty at 20% to be paid upfront with a duty drawback of 5% credited upfront. Means in short ये क्वेश्चन, ये लाइन ये कहना चाहती है कि आपका इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 6 लाख, बट आपको 6 लाख में नहीं पड़ रहा है, कुछ ज्यादा में पड़ रहा है। वाई? बिकॉज यू आर पेइंग कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से। So government does not want to promote imports. So they are levying custom duty from you. कितना? 20%। बट वो बोल रहे हैं नहीं 20% नहीं, हम 5% ड्रॉबैक ही दे देंगे, मीन्स आपको रिफंड कर देंगे 5%। तो इफेक्टिवली कहने से माई कस्टम ड्यूटी इज 15%। सो मेरा 6 लाख का इंपोर्ट कॉस्ट नहीं है, 6 लाख प्लस 15% है। आर यू फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग दिस? बोलो, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट मिस आउट अ सिंगल लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रिपेयर द एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, advise whether Pashvam Limited should continue with the export business or not. Requisite assumptions and note should form part of the solution. So you can use the assumptions that you may require. ठीक है, so let's solve. First part is preparing the statement of working capital needs. So estimation of working capital for Parshvam Limited. उसमें first our heading would be current assets. फर्स्ट करंट असेट में स्टॉक होगा, स्टॉक में रॉ मटेरियल होगा,
WIP होगा एंड FG होगा. ठीक है, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट. सेकेंड, डेटर्स होंगे. डेटर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटर्स: डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट. Third is cash bank balance, which is directly given in the question. Fourth, there were some prepaid expense, which is given in the question. Prepaid expense is administrative expense. So prepaid admin. And also we have advance income tax paid. Income tax advance में भरा है. So again, it is a prepaid expense. Yes or no? So my total of all the current assets would be called as gross working capital. From gross working capital, we have to subtract current liabilities. Current liabilities में first creditors होंगे, correct, creditors होंगे. Then I have outstanding labor. I have outstanding manufacturing overheads. अच्छा, creditors में भी two types, हाँ, domestic and international, or you can say import creditors, and outstanding selling and distribution. ठीक है, so the net result would be called as excess of current assets over current liabilities. उसमें से हम सेफ्टी मार्जिन ऐड करेंगे and we will get our net working capital needs. So this is the format that we have prepared. Next task, जो फिगर डायरेक्ट दिए हुए हो, just copy paste it. So cash and bank balance दिया है 1,50,000. So we will note it down. It is 150, right? 150. Advance income tax दिया है 25,000. Just note it down. So इतना हो गया. Now next step, prepare cost statement. ठीक है, we have to prepare cost statement. So यहाँ से working note 1, preparing cost statement. Now see, this cost statement is little unique. My cost statement will start with raw materials consumed, raw materials consumption. Yes or no? Let me write it in short, RMC. I need to save some space. ठीक है, तो रॉ मटेरियल में टू टाइप्स, डोमेस्टिक एंड इंपोर्ट. रॉ मटेरियल में वंस वी ऐड डायरेक्ट लेबर and cash manufacturing overheads we are using cash cost basis for estimating the working capital needs. ठीक है, so can I say I will get cost of production? Yes or no? Cost of production मिलता है, followed, फिर एड ओपनिंग FG लेस क्लोजिंग FG, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा. आर यू फॉलोइंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? फिर इफ वी ऐड ओपनिंग FG एंड इफ वी सबट्रैक्ट क्लोजिंग FG, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा. COGS. फिर उसमें हम एडमिन एक्सपेंस ऐड करते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करते थे, तो हमें मिलता था कॉस्ट ऑफ सेल्स. इफ वी ऐड प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमें सेल्स का फिगर मिलेगा. सो दिस वाज आवर प्रिपरेशन और द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट.
Followed? So just check the format of cost statement. ठीक है? Followed? So this was, see, this is our cost statement. Cost of sales and done. Now, let's start entering the values, or let's start filling up the values of cost statement. Tell me how much is the raw material consumed for domestic materials or for domestic purchases. Can I say 9 lakh hai? So 9 lakh aa gaya. For imports, tell me students, how much is my raw material consumption ka cost for imports? See, 6 lakh is the import value, but उसमें सरकार 20% इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी ले रही है, बट सामने बोल रही है कि आप 5% ड्यूटी ड्रॉबैक ले लो, मींस रिफंड ले लो. तो हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ imported materials? Can I say 6 lakh प्लस 15%? इफेक्टिवली तो मुझे कस्टम ड्यूटी कितनी भरनी पड़ रही है? 15% ही भरनी पड़ रही है. 20% दे आर चार्जिंग, बट सामने रिफंड भी दे रही है. Effectively 15%, so 690. 6 lakh is the import value plus 15% in the form of net custom duty. You can solve the import ka value using working note as well. Huh? So 6 lakh plus 15% comes to 6 lakh 90,000. Now how much is my direct labor? My direct labor is 6 lakh. So I will add that 6 lakh. My cash manufacturing overheads. My cash manufacturing overheads. बोलो कितना होगा? Can I say my total overheads? This is working note number 2. Calculation of cash manufacturing overheads. My total overheads, total manufacturing overheads given in the question is 26 lakh 40,000. But this is total, this is inclusive of depreciation. कहने से पहले तो मुझे depreciation subtract करना पड़ेगा. Yes or no? To find cash manufacturing overheads. So how much would be my depreciation ka figure? My machine is 24 lakh ka, and I am applying 10% depreciation. So can I say 240 is my 240 is my depreciation ka figure? Just check that. Can you see this? Now, as I told you, see, read this question. Read this line. कहाँ गया? EPC board provides 2.5% on the machine cost as a revenue subsidy. हाँ, अगर कैपिटल सब्सिडी होता तो यार 24 लाख में से -2.5% होता, बिकॉज मेरी मशीन की कॉस्ट कम हो रही है, बिकॉज इट इज अ कैपिटल सब्सिडी. बट यहाँ पे दे टोल्ड दैट इट इज नॉट अ कैपिटल सब्सिडी. हम मशीन की कॉस्ट कम नहीं कर रहे, वी आर प्रोवाइडिंग यू रेवेन्यू सब्सिडी. Means you are benefiting on the revenue expense. Are you following? So यहाँ पे can I say I have to subtract the subsidy amount because मेरा net manufacturing cost तो कम हो जाएगा ना उतना, because I am getting subsidy or refund from government. So less subsidy of 2.5% from EPC board. And can I say this 2.5% is on new machine amount? So 24 lakhs का 2.5%, इतना आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कम हो जाएगा एंड नॉट द मशीन कॉस्ट. So 60,000 would further be deducted. So your net manufacturing expenses आपके जेब से जो गया है,
It is nothing but 2640 minus 240 minus 60,000. 23 lakh 40,000. Did you follow this point, students? See, 23 lakh 40,000. बोलो, आपको समझा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स सब्सिडी एंड रेवेन्यू सब्सिडी? So 23 lakh 40,000 is my cash manufacturing expense from working note 2. Now very important. I have left some space over here. Purposely, I have left some space. Now first, let me calculate my COGS. Let me calculate my COGS. Let me calculate this figure. And opening FG and closing FG will be same. Sir, आप same कैसे बोल रहे हो? Can I say in absence of information, specific information, all activities accrue evenly throughout the year? Means मेरा जैन का जो सेल्स है उतना ही फेब में होगा, मेरा जैन का जो परचेजेस है उतना ही फेब में होगा, मेरा जैन में जो फिनिश गुड्स है उतना ही फेब में होगा, अच्छा मेरा फेब में जो फिनिश गुड्स है उतना ही मार्च में होगा, अच्छा मेरा नवंबर में जो फिनिश गुड्स है उतना ही दिसंबर में होगा. So finished goods will also be same. Opening FG and closing FG will also remain same. Are you following? In absence of information. ठीक है? So हम opening FG लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता because it will be same. Why same? Because of the assumption number 1 that all activities accrue evenly throughout the year. Followed, students? So if it is same, can I say मेरा cost of production over here will itself be my COGS. Are you following? So my cost of production likhu ya COGS likhu, it is one and the same because there is opening FG and closing FG, but both are same figure. So effectively मेरा cost of production का amount and COGS का amount same आएगा. Followed, students? So now let's calculate what is my actual COGS. What is my actual COGS? सी अगर ये सब ऐड करते हैं 9 लाख प्लस 690, 9 लाख प्लस 690 प्लस 6 lakh plus 23 lakh 40,000. So the amount as of now comes to 45 lakh 30,000. ठीक है? तो नाउ लेट्स सी कि हमारा एक्चुअल सीओजीएस इतना ही आ रहा है कि नहीं. क्या हमारा एक्चुअल सीओजीएस इतना ही है कि नहीं? सर इतना ही होगा ना? जरूरी नहीं है. तो सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल कितना होगा? यूज द फॉर्मूला ऑफ सेल्स माइनस जीपी. यस और नो? सेल्स माइनस जीपी, सिंपल फॉर्मूला ऑफ सेल्स माइनस जीपी. कहने से वो सीओजीएस ही देता था. सो चेक करो क्या ये फॉर्मूला से बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला 4530 आ रहा है कि नहीं? कहा गया? चेक करो. आर यू फॉलोइंग, स्टूडेंट्स? सो वर्किंग नोट नंबर 3 would be calculation of COGS. ठीक है? एंड सिंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, हम दोनों का सेपरेट करेंगे, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट. व्हाई? बिकॉज दोनों का सेल प्राइस इज डिफरेंट, इसलिए. तो सेल्स लेस जीपी will give me COGS. Followed? So now our task, now just focus on this task. Calculation of actual COGS. क्या 4530 आ रहा है कि नहीं? We have to check ना. The real formula of COGS is sales minus GP. तो चेक करो ये GP 4530 आ रहा है, then this calculation is correct. So let's check.
कहने से मेरे सेल्स दो प्रकार के हैं, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आएगा। सो हाउ मच इज माय डोमेस्टिक सेल्स? इट इज 30 lakhs. It is 30 lakhs. And how much is my export sales? 24 lakh for 24 lakh 80,000. So total comes to 54 lakh 80,000. Okay. Now they have given that GP is 20%. GP is 20%. Sir, कहा दिया है कैश GP is 20% on domestic sales. On domestic sales. तो कहने से यहाँ तो it is 20% on domestic sales. बट यहाँ GP कितना वो नहीं पता, दिया नहीं है। सो सर कितना ले सर? 20 डोमेस्टिक है तो एक्सपोर्ट का भी 20 ले लो ना सर। अज्यूम ना, लास्ट में लिखा है ना, यू कैन अज्यूम एंड राइट डाउन योर अजम्पशंस। बट क्या एक्सपोर्ट का भी 20% जीपी मार्जिन लेना, क्या ये सही है? थिंक, इज इट करेक्ट? यहां तक फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन अंडरस्टूड कि इट इज गिवन जीपी इज 20% ऑन डोमेस्टिक, तो कहने से 30 लाख का 20% इज 6 लाख. So my COGS for domestic sales comes to 24 lakh. This is agreed. But क्या ये सेम रेशियो मैं एक्सपोर्ट सेल्स के लिए ले सकता हूं? सर ले लो ना, अजम्पशन ही तो लेना है। हाँ, सेलिंग प्राइस आर डिफरेंट, समृद्ध इज करेक्ट. सो लेट्स कैलकुलेट वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ जीपी मार्जिन फॉर एक्सपोर्ट सेल्स. फॉर एक्सपोर्ट सेल्स, बट इसका बेस तो डोमेस्टिक सेल्स का ही होगा। कैसे? देखो, डोमेस्टिक कहना है इफ अ प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिक सेल्स इज सोल्ड फॉर ₹100, तो ये सेल्स 100 कैसे आया होगा? सीओजीएस प्लस जीपी किया होगा। यस और नो? करेक्ट. सो दिस इज डोमेस्टिक सेल्स. लेट्स से पर यूनिट इज सोल्ड फॉर ₹100 इन डोमेस्टिक मार्केट, एंड उसका क्वेश्चन बोल रही है कि जीपी इज 20। तो कहना है मेरा वो एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने में मुझे ₹80 लग रहा है। यस और नो? आर यू फॉलोइंग? वो प्रोडक्ट बनाने में मेरा खर्चा ₹80 का है, उसमें मार्जिन 20 लगा के मैं डोमेस्टिक में ₹100 में बेच रहा हूं। सो इन अदर वर्ड्स, एक्सपोर्ट सेल्स का इसी तरह करते हैं। कहने से एक्सपोर्ट सेल्स का सेल प्राइस पर यूनिट इज नॉट 100, इट इज 100 माइनस 10%, विच कम्स टू ₹90। ठीक है? सो मैं जो एक्सपोर्ट में जो गुड्स दे रहा हूं ना, उसमें सेल प्राइस इज 90, बट कहने से उसका बनाने का कॉस्ट तो 80 रहेगा। व्हेन आई एम मेकिंग द प्रोडक्शन इन माय फैक्ट्री, तब तो मुझे नहीं पता है ना कि ये यूनिट मैं एक्सपोर्ट मार्केट में बेचूंगा या डोमेस्टिक मार्केट में सेल करूंगा, तब तो सब मिक्स बन रहा है ना। आर यू फॉलोइंग? सो वो गुड्स बनाने में, whether I am selling it in a domestic market or whether I am exporting it, वो गुड्स तो एक ही जगह फैक्ट्री में बन रहे हैं, एंड तब तो नहीं पता मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ या डोमेस्टिक में बेचने वाला हूँ। आर यू फॉलोइंग? सो उसका बनाने का कॉस्ट तो 80 होगा। फॉलोड? दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। एंड बैलेंस इज माई जीपी. डिड यू गेट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? Because when I'm manufacturing or producing the goods, at that point in time, I don't know whether I would be selling in the domestic market or export market. So उसका बनाने का cost, whether be it export or domestic, ₹80 ही है. But here the margin changes. GP margin changes. So GP in rupees for export sales is 10. So can I say in percentage, my GP in percentage for export sales would be 10 divided by 90 into 100? Yes or no? 10 divided by 90%. So 11.11% आ रहा है. Understood? So here my GP margin is not 20%. It is how much?
It is 11.11%. Sorry. 11.11%. Are you following? So my GP in case of export sales would be 24 lakh 80 into 11.11%. 275,556. Are you getting this? So my export sales ka COGS would be 2480 minus 275,556. 2204 triple four. Following? And my total COGS in this case would be 24 lakh plus 2204 4604 triple four. Are you following, students? Well, any doubts, any queries? Just check. So ये रहा 4604 COGS is 4604,472. Correct? Any doubts? This was a very crucial point. सर ये सब एक्सरसाइज हमने करी क्यों? ये जस्ट टू चेक कि एक्चुअल सीओजीएस और ये सीओजीएस में डिफरेंस क्या है. तो कहने से मेरा एक्चुअल सीओजीएस यहाँ पे तो 4604 ही आना चाहिए. 4604 ट्रिपल फोर. तो सर जो बैलेंस होगा कहने से इट विल इज नथिंग बट अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. यू हैव टू अज्यूम दिस कि जो बैलेंस कॉस्ट होगा यहाँ पे बीच में इट इज नथिंग बट योर अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. कुछ छोटा मोटा और खर्चा हुआ अब. सो 4604,444 माइनस 45,30,000 74,444. So this is your other cash manufacturing overheads. Balancing figure. Are you following this? Bolo. Any doubts? Any concerns? Done. So ये COGS के बाद हम एडमिन एक्सपेंस ऐड करते हैं. हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं. Correct? And we get cost of sales. Yes or no? I know my total admin expense given in the question is कितना है एडमिन 3,60,000. So I know the total is 3,60,000. उसमें से डोमेस्टिक का कितना, एक्सपोर्ट का कितना. I know my total selling and distribution expense is 3 lakh total for the firm. But उसमें से डोमेस्टिक का कितना, एक्सपोर्ट का कितना, that I don't know. So in absence of information, again, you can assume, you can apportion this cost in the ratio of sales or you can apportion this cost in the ratio of COGS as well. बस उसका assumption का note लिख देने का. ठीक है. So here we will assume that 360 is apportioned in the ratio of sales. 360 into 30 lakh divided by 54.8. So admin for domestic sales is 197,080 and बाकी का बचा हुआ would be for export 162,919. You can also take COGS का ratio, but you just mention the note about it. I have taken the ratio of sales. So selling and distribution का domestic का proportion would be 3 lakh into 30 lakh divided by 54.8 lakh. So 164, 234 minus 3 lakh. 135,766. So my total cost of sales for domestic sales is 24 lakh plus 197,080
plus 164,234, 2761,314. And for export sales, it is 2204,444 plus 162,919 plus 135,766, 25,03,129. And if we add both, it comes to 52,64,443. ठीक है. So this is my total cost of sales. उसमें से डोमेस्टिक मार्केट का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना एंड एक्सपोर्ट मार्केट का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना. सर अलग करने की जरूरत क्या है? ये टू कैलकुलेट डेटर्स ना. सी यहाँ पे ये डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ सेल्स लगेगा एंड हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स लगेगा. उसके लिए अलग चाहिए. फॉलोड. सो इफ आई ऐड cost of production or COGS में admin, which is 3,60,000, and if I add selling and distribution, which is 3 lakh, so it comes to 46,04,444 plus 660, 52,64,444. See, this cost of sales and this cost of sales will tally. ठीक है. 56,04,444. Since we are following कैश कॉस्ट बेसिस, तो हमें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है. सो वेदर यू राइट प्रॉफिट और यू डोंट राइट प्रॉफिट, इट इज irrelevant because we are following cash cost of sales. We are not giving any importance to profit. ठीक है. So with this we have completed the cost statement. And cost statement बनाने के लिए जो वर्किंग नोट्स लगेंगे या जो दूसरे टेबल बनाने हैं, we completed that. ठीक है. अभी तक हम हमारे फाइनल सोल्यूशन में तो आए ही नहीं है. वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड द कॉस्ट स्टेटमेंट एंड कॉस्ट स्टेटमेंट के लिए जो सब वर्किंग नोट्स बनाने हैं वो कंप्लीट किए. फॉलोड. सो लेट्स जस्ट चेक आवर कॉस्ट स्टेटमेंट. So our cost statement is, and one more thing, yes, bank fees we need to add. Bank fees we need to add. I just missed this out because for export sales, can I say bank is charging LOC fees, letter of credit ka fees? Correct. Bank is charging a 5% fees for giving the facility of letter of credit. Yes or no? So 24,80,000 is my export sales. Correct. 24,80,000 is my export sales. उसका 5% बैंक is charging a fees. तो कहने से वो मेरे जेब से मुझे भरना पड़ेगा. So 24,80,000 into 5%, which comes to 1,24,000. Correct. So my total cost of sales would come to 46,04,444 plus 360 plus 3 lakh plus 124, 53,88,444. एंड हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहाँ पे वी नीड टू ऐड एलओसी फीस बिकॉज वो डोमेस्टिक सेल्स में नहीं आएगा. जब वो एक्सपोर्ट सेल्स है तभी आई विल अवेल द फैसिलिटी ऑफ एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट. तो एक्सपोर्ट सेल्स में 124 ऐड हो जाएगा. करेक्ट. सो माय इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर एक्सपोर्ट मार्केट would be 25,03,129 plus 124, which comes to 26,27,129. And if we add the cost of sales for domestic market, तो मेरा total cost of sales will come to 53,88,443. 53,88,443. ठीक है. So LOC charges is also an expense. Followed. So we add LOC charges
We include LOC charges in the cost of sales for domestic market. Sorry, for export market. Domestic में नहीं आएगा. Followed, so 5388,443. So now we are ready with our cost statement and we are ready with sub working notes. So let's just quickly calculate each and every item. Raw material consumption. Batao, how will we calculate raw material consumption? Can I say my raw material stock is for 1 month? So raw material stock हम कैसे calculate करते हैं? It is nothing but RMC, raw material consumed, multiply by RM holding period divide by 12. ठीक है? So इसमें raw material consumed total कितना है? 15,90,000. So 15,90,000 into 1 by 12. Yes or no? अच्छा WIP. कहने से WIP में RM होगा, लेबर होगा एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होंगे. आर यू फॉलोइंग और नॉट? सो RM इज 15,90,000. My WIP holding period, my raw material stays in the process for half a month. So 0.5 divided by 12, and raw material of 90% are introduced in the process, not 100%. Okay. So next is labor. Labor cost is 6 lakh. So 6 lakh into 0.5 divided by 12, and in absence of information 50% complete. Now manufacturing overheads. See, manufacturing overheads, cash manufacturing overheads is 23 lakh 40 plus other manufacturing overheads. दोनों कंसिडर करना है बिकॉज दोनों का कॉस्ट प्रोसेस में इनकर हुआ होगा. फॉलोड? आर यू फॉलोइंग? सो 23 lakh 40 plus 74,444. So 23 lakh 40 plus 74,444 is my total cash manufacturing overheads. 24,14,444. So 24,14,444 into 0.5 months in the process and 50% complete. FG is on COGS. My total COGS as per cost statement is 46 lakh 4,444. So can I say my FG would be 46 lakh 4,444. FG stock is for 1 month and FG is always 100% complete. Okay, so this is how you will calculate FG. Debtors, very important. Domestic debtors. Can I say the formula to calculate debtors is cost of sales multiply by average collection period divide by 12? Yes, 12. Yes or no? Tell me, what is my cost of sales for domestic debtors? It is nothing but 27,61,314. And what is my cost of sales for export debtors? Can I say it is nothing but 25 lakh 3,129 plus 1 lakh 24,000? Correct? So our base for calculating debtors would be 27 lakh 61,314 multiply by average collection period of domestic debtors is 1.5 months. 1.5 divided by 12. Acha, my export cost of sales is 25 lakh 3,129 plus 124. 26 lakh 27,000. 26 lakh 27,129 into, acha, my average collection for export creditors is 3 months. But no, my funds would not be blocked for 3 months. मैं LOC की फैसिलिटी अवेल कर रहा हूं ना, लेटर ऑफ क्रेडिट की, तो मुझे तो 1 महीने में सारा पैसा मिल जाएगा. So my effective amount blocked in export debtors is 1 month only. Followed? So yeah, very important. You have to take 1 month.
स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं, दे टेक 3 months. फॉलोड. सो एक्सपोर्ट का डिटेल्स मिल जाएगा. कैश एंड बैंक बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन. प्रीपेड एडमिन, total admin is 3 lakh 60 and they are 2 months in advance. So when I say 3 lakh 60 proportionate to 2 months, it is in advance. Correct? Advance income tax हो गया. इसके अलावा there are no other current assets. Correct? So now let's move to creditors. Let's move to creditors. My domestic creditors. कैन आई से मैंने क्रेडिटर्स से क्या परचेस किया होगा? रॉ मटेरियल परचेस किया होगा. सो माय रॉ मटेरियल परचेस्ड इज 9 lakhs फ्रॉम डोमेस्टिक क्रेडिटर्स. सो 9 lakhs इनटू, बोलो कितना मंथ इज द क्रेडिट गिवन? 2 months. 2/12. नाउ टेल मी फ्रेंड्स, import creditors, to calculate the value of import creditors, क्या मुझे यहाँ पे 6 लाख लेना चाहिए या मुझे 6,90,000 लेना चाहिए? बताओ. इंपोर्ट क्रेडिटर्स मींस, मैंने क्रेडिटर्स, इंपोर्ट मींस फ्रॉम इंटरनेशनल सप्लायर्स, मैंने कितने का माल खरीदा? कहने से वो तो मैंने 6 लाख का ही खरीदा होगा ना. आर यू फॉलोइंग? हाँ, कंजम्पशन, द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड of imported materials is 690. But for creditors, can I say it would be 6 lakh only? Because creditors is on purchases, credit purchases. So purchase value is 6 lakh only. फिर मैं गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी दे रहा हूं. Are you following? So this is also a point where students ideally do mistake. वो कॉस्ट शीट से देख लेते हैं कि अच्छा इंपोर्ट रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज 690, बट दैट 90,000 इज आई एम पेइंग टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और ड्यूटी. मेरा परचेज वैल्यू तो 6 लाख है ना फ्रॉम इंपोर्टर्स. सो 6 लाख विल कम ओवर हियर. 6 lakh into the payment period to my import suppliers, which is 3 months. Are you following? So likewise, labor, outstanding labor cost is 6 lakh, and it is outstanding for 1 month. So 6 lakh into 1/12. Outstanding manufacturing overheads. Again, my manufacturing overheads is inclusive of both the things. Huh? Even this balancing figure is also your cash manufacturing overheads. So you have to add that and find the outstanding amount. ठीक है. So 23,40,000 plus 74,444, which is 24,14,444. 24,14,444 into outstanding period. It is outstanding for half a month. So 0.5 divided by 12. Selling and distribution is 3 lakh and they are outstanding for 1 month. 1/12. ठीक है. So the resultant figure would be called as excess of current assets over current liabilities. जो भी फिगर आएगा, लेट्स से द फिगर कम्स x, सेफ्टी मार्जिन हम ऐड करेंगे. हाउ मच इज द सेफ्टी मार्जिन गिवन इन द क्वेश्चन? 15%. At 15% we will add and our resultant figure will be called as net working capital needs. Are you following? Any doubts, any questions, any concerns? So just go through the solution once. So raw material consumption is 1590 into 1/12 because RM stock is held for 1 month. फिर हमने WIP calculate किया. And see, here also they have considered other overheads as well as a part of manufacturing overheads only. Followed? Then FG on COGS. फिर डेटर्स को डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट पे बाइफरकेट किया. एंड हियर एक्सपोर्ट सेल्स का क्रेडिट पीरियड इज नॉट 3 months but 1 month.
बिकॉज वी आर अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ LOC और हमें 1 महीने में पैसा मिल जाएगा. फिर प्रीपेड एनबी income tax paid in advance, so your gross working capital comes to 14,37,000. Likewise, we calculated import creditors, domestic creditors, outstanding wages. Again, see, outstanding manufacturing overheads mein, they have also considered the other overheads. Outstanding selling and distribution. Then they added safety margin and they calculate net working capital needs. ठीक है. Followed students, any doubts, any questions, any concerns in this part of the question? First part. It was a very lengthy question and a very good question, I would say. बोलो कोई query, कोई doubts, कोई concerns? I am not wasting my time to write all the figures क्योंकि हमारे पास दूसरे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं बचेगा. But did you follow? I'm giving you 30 seconds to digest this question. Did you all follow? एक एक पॉइंट हमें लेना है, ध्यान से लेना है. Samruddhi followed, but what about other participants? 30 seconds time. Quick, quick, quick. Aksa. Okay. Followed. ठीक है. So now this was the first part of the question. Second part. Advise whether the Parshvam Limited should continue with the export business or not. क्या पूछ रहे कि क्या एक्सपोर्ट बिजनेस हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं. तो हम सिंपली एक ही चार्ट देखेंगे. कौन सा चार्ट देखेंगे? वेरी सिंपल, दिस चार्ट. मेरा एक्सपोर्ट सेल्स कितना हो रहा है और सामने एक्सपोर्ट का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो रहा है. वी विल सी दैट चार्ट. सो कहना है मेरा एक्सपोर्ट से सेल्स तो मुझे 24,80,000 का ही हो रहा है. मीन्स आई एम गेटिंग मनी ऑफ 24,80,000 ओनली. बट सामने मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स देखो कितना है. 25,03,129 plus 124. 26,27,129 का मेरा कॉस्ट है एंड आई एम सेलिंग दैट कॉस्ट एट 24,80,000. सो मैं घाटा कर रहा हूं एक्सपोर्ट में. Yes or no? As far as monetary factors are concerned, financially, in terms of monetary value, मेरा नुकसान हो रहा है. यहाँ पे मेरा कॉस्ट 26,27,000 आ रहा है, whereas I am selling it only for 24,80,000. So if just monetary factors are considered, only monetary terms में हम valuation करें, तो we should not continue. But can I say apart from monetary value, there are certain other factors that also needs to be seen. मान लो मैं एक्सपोर्ट सेल कर रहा हूं तो मुझे मोर एंड मोर इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे एंड फ्यूचर में व्हेन आई गेट अ ह्यूज वॉल्यूम मेरा ये जीपी का रेशियो भी मैं बढ़ा सकता हूं ना. दिस इज जस्ट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस. सी क्वेश्चन में बोला है स्टार्ट में ही कि यू आर स्टार्टिंग अ न्यू और यू आर एंटरिंग और यू आर अ न्यू एंट्रेंट इन द इंटरनेशनल बिजनेस. आपको एक्सपांड करना है इंटरनेशनल लेवल पे. तो इनिशियली सारे बिजनेस ब्रेक इवन पे नहीं आ जाते. आर यू फॉलोइंग? इनिशियली यू हैव टू बेयर सम लॉस. यू हैव टू बेयर दैट पिंच ऑफ लॉस इफ यू वांट टू ग्रो इन द फ्यूचर. ठीक है. आज सारे जितने भी बिजनेसेस है, जोमेटो बोलो, स्विगी बोलो या क्विक कॉमर्स वाले बोलो, उनके रेवेन्यू बहुत ज्यादा है बट दे आर स्टिल फेसिंग द पिंच ऑफ कैश क्रंच. फॉलोड? उनके पास उतने कैश फ्लोज नहीं जनरेट हो रहे. फॉलोड? सो जस्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट को कंपेयर नहीं करना है. वी हैव टू कंपेयर अदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल. हाँ, इफ यू आर जस्ट कंसिडरिंग द मॉनेटरी वैल्यू तो यू आर इनटू लॉस. यू शुड डिसकंटिन्यू विद द एक्सपोर्ट बिजनेस. बट कहने से ये तो जस्ट शुरुआत है. अभी तो जस्ट पार्टी शुरू हुई है. यस और नो? सो आगे
There are chances once you grow, once the customer relation gets developed, you get more and more customers. एंड धीरे धीरे आप ब्रेक इवन में आ जाओगे, धीरे धीरे आप प्रॉफिट में आ जाओगे. Followed? So this is what all it is explained. If just monetary aspect is considered, तो आपका कॉस्ट इज 26,27,000, सामने सेल्स इज 24 लाख. बट इन रियलिटी new factors or non-monetary factors are also to be considered. Exports will add new customer base. Further, existence at international level will bring a good image and credibility to you. ठीक है, so ये सब चीजें देखनी पड़ती है. Followed? And based on that, company can decide. Any doubts, any questions, any concerns? बोलो. Shall I move to next question very quickly? So this was a very unique and a good question. उतना सिंपल नहीं था, but उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं था. So I hope everyone has followed all the explanation for this question. Now let's move to one question on management of receivables. अच्छा, इसमें तो नहीं है. Okay, here is a question of मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स. ठीक है, ये आई गेस सितंबर 2024 अटेम्प्ट का है. आरटीपी सितंबर 2024. क्वेश्चन 11. Banu Limited is considering relaxing its present credit policy and is in the process of evaluating two proposed policy. Means there is a present policy, साथ में we have to compare another two policy, policy 1, policy 2. Currently the firm has annual credit sales of 225 lakhs and accounts receivable turnover ratio of 5 times in a year. ठीक है, accounts receivable turnover ratio. The current level of loss due to bad debts is 750. The firm is required to give a return of 20% on the investment on new accounts receivable. Policy option 2 requires a policy option 2 requires a manager to manage the receivables with a salary of 50,000 per month. The company's variable costs are 60% of the selling price. Given the following information, which is the better option? So in short, can I say this question is first of all on the chapter of receivables management. अच्छा, receivables management में भी first part पे evaluating different policies and selecting the best one. Yes or no? इसी पे. So let's try and find and calculate the net benefit under present policy, under policy 1, under policy 2. Now, they have given annual credit sales, correct? So this is evaluation of different policies, correct? So present policy 1, policy 2. Now how much is my annual credit sales? It is given in the question. 225 lakh, 275 lakh, 350 lakh. 225 lakh, 275 lakh, 350 lakh. Let us just calculate amount in lakhs. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा?
Can I say it is 60% of the selling price? Means 60% of the sales. So my contribution would be 40%. So in other terms, my PV ratio is 40%. So quickly tell me, what is my contribution amount under present policy, under policy 1, under policy 2? Batao. Or else just to save the time, we can just quickly take the figure from the solutions. Question 11. How much? 90,110,140. This is the amount of contribution, right? 90,110,140. They haven't calculated contribution. उन्होंने variable cost calculate किया है. ठीक है? So 90. अब apart from this contribution, can I say अब इसके बाद I will subtract all the cost that I have to incur? Is there any administration cost? So कौन से cost आते थे? Admin cost, bad debts cost, collection cost, discounting cost, and cost of carrying debtors. So ideally और generally I would say in majority of the question ये 5 cost आपको subtract करने पड़ेंगे. Admin, bad debts, collection, discounting, and cost of carrying debtors. Cost of carrying debtors is nothing but opportunity cost of investment in debtors. ठीक है. अच्छा, एडमिन कॉस्ट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी कुछ है? क्वेश्चन में दिया है एनी एडमिन कॉस्ट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी? नहीं, कुछ भी नहीं है. सो नील. पॉलिसी 1 में भी नील. बट पॉलिसी 2 में यस दिया है. पॉलिसी ऑप्शन 2 रिक्वायर्स अ मैनेजर टू मैनेज द रिसीवेबल्स विद 50,000 पर मंथ. यस और नो? सो ईयरली कितना होगा बताओ? 50,000 पर मंथ ईयरली. कहना है 6 लाख. पॉलिसी 2 में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगा. Since we are calculating it in lakhs, so just 6 followed. Acha, bad debts. How much is my bad debts under present policy? The current loss of bad debts is 7.5 lakh. So under present it is 7.5. How much would be my bad debts under policy 1? It is given in the question, 22.5. And under policy 2 it is 47.5. ठीक है. Is there any collection cost? No. Is there any discounting cost? No. So we will not write and just waste our time. हाँ, but cost of carrying debtors तो है ही. Cost of carrying debtors means opportunity cost of investment in debtors. In short, we term this as COCD. So we will calculate COCD using working note number 1. So working note number 1. Calculation of COCD under 3 different scenarios. For present policy, for policy 1, for policy 2. Step 1. हमारा step 1 क्या होता था? Calculate the amount of debtors. चलो, smart students, tell me how will we calculate the amount of debtors? हमारे पास annual credit sales है. हमारे पास रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है. बताओ, हाउ विल वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स? ट्राई. What is the formula for accounts receivable ratio?
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल रेशियो, बताओ। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ये रेशियो चैप्टर याद करो ना। Why is no one responding? What is the accounting turnover, accounts receivable turnover ratio की formula? Someone responded. 12 upon accounts receivable turnover ratio. Yes, correct. So this you will get collection period for the debtors. So in this case, in ideally in all of the questions, हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड पता होता था। एवरेज कलेक्शन पीरियड पता होता था या दिया होता था, बट इन दिस केस दे हैव नॉट डायरेक्टली गिवन एवरेज कलेक्शन पीरियड, दे हैव गिवन receivables turnover ratio. Are you following what they have given? Receivables turnover ratio. So can I say receivables turnover ratio is what, as Samriddhi rightly said, 12 upon accounts receivable turnover ratio. So average collection period is nothing but 12 upon receivables turnover ratio. ठीक है। So for present policy, for policy 1, for policy 2, 12 upon what is my receivables turnover ratio? It is 5. 12 upon 4, 12 upon 3. 12 upon 3. So 12 upon 5, 2.4 months. If you want to calculate in days, then take 365 in the numerator, or 52 if you want to take it in weeks. 3 months, 4 months. So can I say now my average collection period is 2.4, 3 months and 4 months? Yes or no? So once I'm able to find the average collection period, I can easily calculate debtors. How to calculate debtors? अच्छा, डेटर्स हम वर्किंग कैपिटल में कैसे कैलकुलेट करते थे? कैन आई से इट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्स into average collection period divided by 12. Yes or no? Correct. So in the present policy, my cost of sales would be how much? My cost of sales would be how much? I cannot take annual credit sales, huh? Because annual credit sales includes the element of profit as well. So can I say my cost of sales would be sales minus variable cost, which will give me contribution, and minus other cash fixed cost? Yes or no? Contribution में से मैं minus fixed cost करूंगा तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, करेक्ट? सो माय कॉस्ट ऑफ सेल्स वुड इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट, बोथ। फॉलोड? बट यहाँ पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है। So can I say my cost, my total cost would just be the variable cost का amount? Are you following this? So debtors is based on credit sales, but how much is the opportunity cost or how much is the amount blocked in debtors? Can I say उस debtors का जो cost होगा उसमें मेरा अमाउंट ब्लॉक हुआ होगा।
So my debtors again will not be valued on sales. It will be valued on cost. So here also we are following cash cost basis. Followed? So can I say my debtors would be first of all not be based on 225 lakh, but it will be based on 225 ka 60%. Hey, are you following this or not? Into 2.4 divided by 12. So this is the amount of my debtors. 225 into zero point 0.6 into 2.4 divided by 12. 225 into zero point 0.6 into 2.4 divided by 12. 27 lakhs. Admin cost and bad debts cost are not considered. We just consider the operating cost. Operating cost in the form of fixed cost and variable cost. ठीक है? So 2 point, so ये कितना आया? 27 lakh is my debtors under, is my amount blocked in debtors under present policy. This is how you should interpret. 27 lakh is the amount blocked in my debtors in the present policy. Now under policy 1, can I say it would be 275 lakh ka 60% and average collection period is 3 months? Yes or no? And in present policy 2, it would be 350 ka 60% into 4 divided by 12. Correct? So 275 into zero point 0.6 into 3 divided by 12. 41.25. And 350 into 60% into 4 divided by 12. 70 lakhs. So this is the amount blocked in my debtors. Followed? So let's just check. How much is the amount blocked in my debtors? Acha, this is after applying interest. Okay. So first step is done. We have calculated debtors. Now second step, step 2. I hope you all very well remember that to calculate COCD. See, we don't want to calculate. हमें सिर्फ debtors amount calculate छोड़ नहीं देना है. This is the amount blocked. Now can I say I have to raise these funds? Either I have to invest my own funds or I have to take a loan for the amount blocked. Because मुझे ये funds तो लगेगा for smooth running of business. I cannot afford getting blocked. So either I will raise these funds from outside or I will invest on my own. So उसका percentage कितना दिया है? Can I say ROI percentage is 20%. Means if I am raising the funds from outside, I am paying 20%. Or if I am investing my own funds, I am losing the opportunity to earn 20%. Are you following? This is how you interpret. अगर बाहर से रेस कर रहे हो तो आपको 20% ब्याज देना है. अगर खुद लगा रहे हो ये पैसा, द अमाउंट दैट इज ब्लॉक, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर ओन फंड्स, तो आप 20% बाहर कमाने की अपॉर्चुनिटी जाने दे रहे हो. फॉलोड? सो प्रेजेंट 1 and 2. So can I say my COCD would be 27 lakh ka 20%, second 41.25 lakh ka 20%, and third 70 lakh ka 20%. So 27, so this will be 5.4 lakh, 41.25 into 20%, which gives you 8.25 lakh, and 70 lakh ka 20% will give you 14 lakhs. Okay? So this is my opportunity cost of investment in debtors. Are you following? So your cost of carrying debtors is 5.4, 8.25 lakh, and 14 lakhs. Are you following? So let's just check this. So 5.4, 8.25, and 14 lakhs. So this is opportunity cost of investment in debtors. Or you can say opportunity cost of investment in receivables. So how much is my net benefit? Net benefit before tax? Can I say it is nothing but contribution? कहा गया contribution 90 lakhs
-7.5 लाख -5.4 लाख, करो तो कितना आ रहा है? 90 lakhs -77.1 lakh. For present policy, it will be 110 lakh -22.5 -8.25, 79.25 lakhs. एंड लास्ट में 140 lakh -6 lakh also. 140 -6 -47.5 -14, 72.5 lakh. So net benefit, can I say it is highest in present policy one? Sorry, policy one, not the present policy, but policy one. 79.25, 72.1. So here they have solved directly. I followed a stepwise approach. Okay, to calculate COCD or to calculate opportunity cost of investment in receivables. Followed. So since the net benefit under present policy, not the present policy, but policy one is highest, company should go for policy one. Followed. So last में आपको advice देनी है. And very important note, very important note, debtors are valued at variable cost in absence of information, in absence of information on fixed cost. ठीक है. हाँ, अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया होता तो आर डेटर्स वुड बी सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड. ठीक है. आइडियली इन ऑल द क्वेश्चंस और इन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया होता है, बट यार दे हैव नॉट गिवन एवरेज कलेक्शन पीरियड. They have given turnover ratio. So this is not 5 months, 4 months, or 3 months of average collection period. No, this is receivables turnover ratio. So receivables turnover ratio is nothing but, sorry, average collection period is nothing but 12 upon receivables turnover ratio. Followed everyone? In case of tax, so in case of tax तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? This is net benefit before tax, correct? This is net benefit before tax. इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स करते हैं. फॉलोड. सो उसमें इसकी भी इफेक्ट आ गई ना, सीओसीडी आफ्टर टैक्स हो जाएगा ना वंस वी सबट्रैक्ट टैक्स फ्रॉम दिस फिगर. सो ये कंसीडर कर लिया ना हमने. सो नो नीड टू calculate cost of carrying debtors after tax in the working note because उससे confusion होगा. So better follow this format. So this is net benefit before tax. इसमें हम टैक्स माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स. एंड नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स will include the effect of tax on COCD as well. Is this clear, Samruddhi? Students, any doubts, any concerns? All the other participants, I hope today's session also added some value in your academics. Other way? Which other way? So what would have they done, you know? ये नेट बेनिफिट यहाँ लिया होगा बिफोर टैक्स एंड फिर सी आंसर एट एनी विच वेज यू फॉलो द आंसर वुड बी सेम ओनली. अगर आप कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स आफ्टर टैक्स वर्किंग नोट में करते हो तो दिस नेट बेनिफिट विल नॉट इंक्लूड दिस फिगर. आर यू फॉलोइंग? इफ यू आर कैलकुलेटिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप ये कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स वर्किंग नोट में आफ्टर टैक्स करते हो
So first you have to calculate net benefit before tax, excluding cost of carrying debtors. Are you following? Excluding cost of carrying debtors. So पहले इसका net benefit निकालो, then subtract the tax, so you will get net benefit after tax, but again excluding cost of carrying debtors, and फिर cost of carrying debtors minus किया है. Are you following? So I strongly advise आप format इसी हिसाब से जाओ. Don't confuse yourself by calculating cost of carrying debtors after tax in the working note itself. ठीक है. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको निकाल देना पड़ेगा फॉर्मेट से, एंड कैलकुलेट नेट बेनिफिट बिफोर टैक्स एक्सक्लूडिंग दिस सीओसीडी कॉस्ट. फिर उसमें टैक्स माइनस करो तो यू विल गेट नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स, बट अगेन दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ सीओसीडी. फिर सीओसीडी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अब दोनों आफ्टर टैक्स होगा. ठीक है. So with this, we end today's revisionary LVC, which was all about management of working capital. I hope you all followed and you were able to recollect all the concepts. So no doubt, no questions. Let's end this today's session. Thank you all. Thank you for your time. All the best for your examinations. Do well. And ICAI will always be, if you have any doubts, if you have any queries, if you have any issues to be resolved. So don't worry. Okay, tech team, I'm ending. Support team, I'm ending today's session. Thank you.